Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, and verse number 21. Savaikilayam Purusha Puratano Ye Eke Asid Vishesha Atmani Agre Gunebhyo Jagadatmanishware Nimilitatmani Shupta Shaktishu. They said, here he is, the original personality of Godhead, as we definitely remember him. He alone existed before the manifested creation of the modes of nature, and him only, because he is the Supreme Lord, all living beings merge, as if sleeping at night, their energy is suspended. So what's happening now is the women, like what's happening is Bhagwan Shri Krishna is leaving, है ना, leaving Hastinapur and he's going to Dwarka. So last week we discussed that absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is unsung poetry, the ladies on the roof of all houses of Hastinapur began to talk of him. Then I sent you guys some notes for that, and today I'll send you the notes for today's class anyway. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. It was one of the most interesting verses. It's very simple, but it has got amazing sentence in there which says the ladies who were talking about Krishna on the rooftop, their talks were more attractive than the hymns of the Vedas. And we discussed, what is the purpose of Vedas and all those sort of things. Now, what they were saying, those women, ladies on the rooftop, they're saying, here is the original personality of Godhead, जो आज का verse है ना. So they're saying, here he is, the original personality of Godhead, as we definitely remember him. And क्या बोल रही हैं? He alone existed before the manifested creation. भगवान सबसे पहले भी भगवान थे. And before the manifested creation of mode of nature, and in him only all living will merge. Dissolution में क्या होने वाला है? As if sleeping at night, their energy suspended. देखो कितना, it is such a coded, Sanskrit is such a coded language. This 2.5 lines Srila Prabhupada has described in like probably 2-3 pages. Let's get someone to read the purport. Anybody want to read the purport? I can read, Prabhuji. Yeah, please read. Puja Mataji, if you want, you can read. No. Go ahead, Mataji. Please go ahead. Okay. There are two types of dissolution of the manifested cosmos. At the end of every, oh God, I don't 4 know how billion many, 320 million. 320 million solar years, when Yeah. Brahma, the Lord of one particular universe, goes to sleep, there is one annihilation. And at the end of Lord Brahma's life, which takes place at the end of Brahma's 100 years of age, in our calculation, at the end of 86 million, I guess, multiply by 30. Yeah, 8 billion. 8 billion, billion. 640 million. 8 billion 640 million times 30 times 12 times 100 solar years. That is the age of Brahma, which is around 311 trillion years. Wow. Hmm. There is complete annihilation of the entire universe. And in both the periods, both the material energy called the Mahat Tattva and marginal energy called Jiva Tattva merge in the person of the Supreme Lord. The living beings remain asleep within the body of the Lord until there is another creation of the material world. And that is the way of the creation, maintenance, and annihilation of the material manifestation. The material creation is affected by the interactions of the three modes of material nature set in action by the Lord. And therefore, it is said here that the Lord existed before the modes of material nature were set in motion. In the Stuti mantra, Shruti mantra, Shruti. in the Shruti mantra, it is said that only Vishnu, the Supreme Lord, existed before the creation, and there was no Brahma, Shiva, or other demigods. Vishnu means the Mahavishnu, who is lying on the casual ocean. By his bedside, by his breathing, only all the universe are generated in seeds and gradually develop into gigantic forms with innumerable
planets within each and every universe. Wow. The seeds of universe develop into gigantic forms in the way seeds of a banyan tree develop into numberless banyan trees. Numberless banyan trees. This Mahavishnu is the plenary portion of the Lord Sri Krishna, who is mentioned in the Brahma Samhita 5.48 as follows. Let me offer my respectful obedience or Obeisances. Yeah. obeisances onto the original personality of Godhead Govinda, whose plenary portions is the Mahavishnu. All the Brahmas, the heads of the universe, will only for the period of his exhaling after the universe are generated from the pores of his transcendental body. Thus, Govinda or Lord Krishna is the cause of Mahavishnu also. The ladies talking about this Vedic truth must have heard it from authoritative sources. An authoritative source is the only means of knowing about transcendental subject matter definitely. There is no alternative. We'll stop here. We'll stop here. We'll discuss Yeah. this. What an incredible purport. It's a long purport, so we're gonna divide it, and we'll do the rest late in a bit. So a lot of you would know actually these classes that we are running right now is actually a little bit different than what we do in our Friday classes, because this is a little bit more goes into tattva, like the science of Krishna consciousness, you know. So if you look at it, first of all, we understand that there is a creation, maintenance and dissolution. जब हम लोग छोटे थे हम लोगों को क्या पता था कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बना दी, एंड दैट्स इट, है ना, हमें और कुछ नहीं पता था. Now, when you read this Srimad Bhagavatam, we've been reading. This is only first canto. There are 12 cantos in it, and we've been doing this for Puja Mataji. How long we've been doing this for? How many years? More than 2 years. More than 2 years we're doing. We're still on first canto, है ना? So there are 12 cantos, by the way. We are still on first canto for the last 2 years. Because we were doing 1 day a week before. Now we started doing 2 days for a little bit of time. So I think it's gonna go a little bit more, you know. So, so what happens is, so if you look at this is a little bit more deeper in there, in the sense that we used to think यार cosmos कैसा होता है, कि विष्णु आए, उनके नाभि में से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सारी ये बना दी, और जो खत्म हो गया एंड ब्रह्मा जी ने दोबारा बना दी, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी दोबारा बना देंगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, what happens is Mahavishnu is lying on a causal ocean, है ना. करणो दक्ष कारणव ओशन इसको कहते हैं, कारण 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 समुद्र जिसको कहते हैं, कारण समुद्र में ही इज लाइंग डाउन एंड ही इज ब्रीदिंग, एंड ही हैज गॉट हिज आईज क्लोज एंड ही इज breathing in and breathing out. When he breathes out, we will see in this, from the pores of his hand, जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं ना, पोर्स, उनके पोर्स में से, एवरी पोर में से यूनिवर्सेस निकल के आ रहे हैं. सो हमारा जो एक यूनिवर्स है, इट्स कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ द पोर्स ऑफ महाविष्णु. सो यू नो, आजकल की साइंस में दे टॉक अबाउट मल्टीवर्स, है ना, which is actually true, because we are not the one universe. There are billions and trillions of quadrillions of quintillions of universes. Because जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, उनकी सांस छोड़ने के साथ उनके पोर्स में से, हर एक पोर में से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं. अब सपोज, एंड ऑल दोज यूनिवर्सेस आर द शेप ऑफ egg, and I'll show you the proof of this. If you can, you guys can you guys see my screen? Yes, Prabhuji. Okay. Yes, Prabhuji. So there is a verse in Brahma Samhita, yasya ke nivasita kalam athavalambya
जीवन्ति लोम विलहा जगदण्ड नाथा, विष्णु महान सह्यस्य कला विशेषो, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. Brahma ji, he is the creator of the universe, this universe, he is saying these prayers. Now, what is the translation? Brahma and the other lords of the mundane worlds appearing from the pores of hair of Mahavishnu remains alive as long as the duration of Vagna exhalation of Mahavishnu. Now, if you look at it, भगवान की एक सांस ली उन्होंने, सांस छोड़ी, और जब तक वो सांस छोड़ी और सांस ली, उस दोनों के बीच में जो गैप था, उतना जो ड्यूरेशन है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ व्हाट? ब्रह्मा. दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ व्हाट? ब्रह्मा के जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ टाइम महाविष्णु की एक सांस के बराबर है. यू नो, आई एम नॉट टू श्योर, आप लोगों में से किसी ने सुना है इसके बारे में? व्हाट इज इट कॉल्ड? द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम changes when you change space. That's why it's called space time event. Like, there are two things that controls anything that is happening. One is a space and one is time. So when the space time entanglement happens, sometimes the time will not be the same as here. Like, for example, the time that you feel in earth may be different to the time you feel in Jupiter, because of sheer mass of Jupiter. So it's actually a little bit different. So इसी तरीके से different planetary system में हम जाएंगे, different layers of the universe हम जाएंगे, the time actually behaves differently. So ब्रह्मा की क्या एज है? ब्रह्मा की एज है, ब्रह्मा का, सॉरी, एक दिन जो होता है ना, ब्रह्मा का एक दिन, दैट मीन्स ही हिज 12 आवर्स इज कॉल्ड वन डे ऑफ ब्रह्मा. हिज 12 आवर्स इज इक्वल टू 4,320,000 सोलर ईयर्स. 4,320, सॉरी, 4,320,000,000, 4.3 बिलियन ईयर्स. 4.3 बिलियन ईयर्स का सिर्फ भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा का एक दिन होता है. फिर उतनी ही लंबी उनकी रात होती है. तो जब ब्रह्मा एक दिन पूरा करके जब सोते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे जो जीव होते हैं, ये वापस सुषुप्ति की स्टेट में चले जाते हैं. जब नेक्स्ट डे ब्रह्मा जी उठते हैं, वापस वो सृष्टि बनाते हैं. लेकिन ये जो सृष्टि हो रही है, सिर्फ एक, ये हम सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. हर एक यूनिवर्स में अलग ब्रह्मा है. हर एक यूनिवर्स के, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में जो ब्रह्मा जी हैं, वो चार मुखी ब्रह्मा है. ठीक है, क्योंकि ये लिटिल बिट लेस कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है. लेकिन बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सेस में हैं जहां पर ब्रह्मा जी जो हैं, उनके हेड हैं 1,000 हेड, मिलियन हेड्स के भी ब्रह्मा है. क्योंकि जितना बड़ा यूनिवर्स हो गया, उतने उनके उतने हेड होते हैं उनके. तो हमारे जो ब्रह्मा जी, वेरी सिंपल, ही इज अ डिवोटी एंड इट्स अ पोस्ट. ब्रह्मा जी इज अ पोस्ट. तो क्या होता है, व्हेन उनके महाविष्णु के पोर्स में से व्हेन द यूनिवर्सेस कम आउट, वो यूनिवर्सेस के यूनिवर्स जो होता है, वो अंडे के जैसा दिखता है. जगदंड नाथा, यहाँ पे है, नहीं, हाँ, यार वो कहाँ गया? एक और मैंने इसमें डाल के रखा था. हाँ, जगदंड नाथा, हाँ, ये रहा. सो ये जो हर एक जो यूनिवर्स है, वो कैसा है? अंडे के जैसा है. जगद अंड नाथा, आप लोगों को दिख रहा है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज. जीवंती लोम विलजा. लोम विलजा का मतलब था पोर्स में से क्या निकल रहा है? जगदंड. जगद जो है अंडे जैसा, अंड नाथा. यशा निवसिता. निवसिता का मतलब होता है ब्रेथ, भगवान की ब्रेथ. यशा के निवसिता. कालम, काल का मतलब होता है टाइम. अथावलंब्या. अथावलंब्या का मतलब होता है उस समय कहाँ शेल्टर ले रहे हैं वो लोग. कहाँ शेल्टर ले रहे हैं? भगवान के उधर रोम छिद्रों में. और जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का एक दिन मैंने बताया 4.3 बिलियन ईयर्स का होता है. ठीक है. उसके बाद ब्रह्मा जी सोते हैं, फिर वापस जब नेक्स्ट डे जगते हैं, ही क्रिएट्स अगेन. सो होता क्या है, आई टेल यू अगेन. सो ब्रह्मा जी सबसे पहले महाविष्णु आए. महाविष्णु इज लाइंग ऑन ए कॉजल ओशन. ठीक है. एंड ही इज लाइंग, एंड उनके रोम छिद्रों में से अंडे अंडे के शेप में ब्रह्मांड निकल रहे हैं. ठीक है. अब हर एक जो ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं राइट नाउ. उस एक ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है? खाली ब्रह्मांड है, उसमें कुछ भी नहीं है. पहले ये महाविष्णु उसको आधे को पानी से भर देते हैं.
ठीक है। और वो जो जल है वो भगवान का ही जल है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके ऊपर ये जो महाविष्णु है, ये जो यही जो सेम महाविष्णु हु इज लाइंग डाउन, ही गोज इनटू ईच ऑफ दोज अंडाकार यूनिवर्सेस में एज गर्भोदक्षाय विष्णु। सो अभी ये महाविष्णु है, ये महाविष्णु एक है, सिंगल एंटिटी है। अब ये सिंगल एंटिटी हर एक में अलग अलग चली जाती है, मतलब ही जस्ट एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू ईच एंड एवरी यूनिवर्स। और हर एक यूनिवर्स में जो वो एक्सपेंड करके जाते हैं, उनको उन विष्णु का नाम है गर्भो दक्षाय विष्णु। नाउ दैट गर्भोदक्षाय विष्णु इज लाइंग ऑन ए अंडाकार, अंडे के शेप का यूनिवर्स है, उसके अंदर वो लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से, उनके नेवल में से एक कमल का फूल निकलता है। एंड देन ब्रह्मा उस पर प्रकट होते हैं, है ना। एंड देन ब्रह्मा को ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, ही एक्चुअली टेल्स हिम, हे आई एम गोना गिव यू ऑल द नॉलेज, आई एम गोना गिव यू ऑल द creative power, I will give you all the knowledge, all the ingredients, go and create the material universe, because जो जो सोल्स में अभी तुम्हें भेजने वाला हूं, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ सेटअप, तो उनका सेटअप करो तुम। देन दिस ब्रह्मा हु इज सिटिंग ऑन अ लोटस फ्लावर, ही क्रिएट्स 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, है ना। हमारा जो अर्थ है भूतल, है ना, उसके ऊपर होता है भूर भुव, है ना, भूर भुव। फिर उसके आता है जनलोक तपलोक, भूलोक भूवरलोक, जनलोक तपलोक सतलोक, है ना, ऐसे भू भूवर जनलोक सत्यलोक, है ना। और ऊपर जो सबसे ऊपर होता है ब्रह्मलोक होता है। ठीक है, ये मटेरियल प्लैनेट्स की, मटेरियल वर्ल्ड की बात करता हूँ। वो जो ब्रह्मलोक होता है उसमें ब्रह्मा का निवास होता है, उसमें ब्रह्मा का घर है। फिर हमारा जो पृथ्वी है, भूलोक, वो बिल्कुल मिडल में है, उसके नीचे होता है अतल वितल सुतल तलातल पाताल, है ना। ये सारे के सारे जो प्लैनेट हैं इसके नीचे होते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, दे आर 14 इन हियर। लेकिन ये सिर्फ हमारे इस यूनिवर्स की बात हो रही है। देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस ऑफ मोर यूनिवर्सेस, दे आर स्टिल फ्लोटिंग। ठीक है, उसमें भी यही सब चीजें चल रही हैं ऑन ए ग्रैंडर स्केल। हम लोग सिर्फ अपने यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा की लाइफ हमारी लाइफ के हिसाब से कितनी है? 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। तो 4.3 बिलियन ईयर्स का तो उनका एक दिन होता है, फिर उतने ही दिन की, उतने ही 12 घंटा होता है, और उतने ही 12 घंटे की रात होती है व्हेन ही स्लीपिंग। सो जब वो 12 घंटे की रात को जब वो सोते हैं, देन द होल क्रिएशन गेट्स डिसॉल्व्ड अगेन। फिर वो नेक्स्ट डे उठते हैं, ही क्रिएट्स अगेन, है ना। एंड देन व्हेन एवरीथिंग, तो जब वो बार बार क्रिएट करते हैं, एवरी रात को सो के सुबह उठ के वापस क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ दो प्लेनेट नहीं, नहीं उनको क्रिएट करने पड़ते हैं। जो उनका खुद का लोक है ब्रह्मलोक, और उसके नीचे का लोक है जो तपलोक होता है ना। तपलोक और सत्यलोक, ये दो लोक होते हैं जिनको दोबारा नहीं क्रिएट करना पड़ता। बाकी सारे सारे जो रात होती है, ब्रह्मा की रात होती है, सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अगेन नेक्स्ट डे ब्रह्मा को वो सारे वापस बनाने पड़ते हैं। एंड देन वापस 4.3 बिलियन ईयर्स निकल जाते हैं, फिर वापस रात होती है, वापस ये सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करके जब ब्रह्मा के 100 साल हो जाते हैं, विच इज 4.3 ट्रिलियन ईयर्स, 4.3 या 411, आई कांट रिमेम्बर, समथिंग ट्रिलियन ईयर्स हो जाते हैं, देन द होल थिंग इंक्लूडिंग ब्रह्मा गेट्स डिसॉल्व्ड। द होल जो अंडे का जो अंडा जो भगवान के रोम छिद्रों में से निकला था, आफ्टर 4.3 ट्रिलियन ईयर्स वो वापस कोलैप्स होकर रोम छिद्रों में घुस जाता है, बिकॉज दैट टाइम व्हाट्स हैपनिंग इज महाविष्णु इज ब्रीदिंग इन। सो ये जो पूरा टाइम क्या था, ये भगवान का ब्रीदिंग आउट के बाद यूनिवर्स निकल रहे हैं, एंड ब्रीदिंग इन में एक सांस के बराबर जो टाइम होता है, दैट इज द लाइफ ऑफ ब्रह्मा। अब आप लोग बोलोगे यार हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स, है ना, बट इट्स नॉट रिडिकुलस फॉर एंट, लाइक नॉट फॉर एंट। देर आर सम पतंगे, आपको पता है पतंगे, देर आर स्मॉल लिटिल इंसेक्ट्स होते हैं, नॉट पतंगे बड़े वाले, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो लाइट पे अट्रैक्ट होते हैं इंडिया में ना। आपको पता है कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनकी टोटल लाइफ स्पैन होता है अराउंड 3 आवर्स। सो दे आर born, they have done their whole life and they die in 3 hours। सपोज मैं सो रहा हूँ, ठीक है, और वो लाइट जल रही है, और वो कीड़ा यहाँ पैदा हुआ मेरी आंख के पास में, उसने सब कुछ करा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बिल्कुल यंग हुआ, सारी जिंदगी जी, बूढ़ा हुआ, उसके बाद मर गया। उसने क्या देखा कि यहाँ पर दिस पर्सन इज लाइंग डाउन, उसको लगा
ही वुडंट इवन लुक एट मी एज ए पर्सन, ही विल लुक एट मी, ओ यहाँ पर कुछ चीज है जो इस तरह की दिखती है, एंड इट इज ऑलवेज देयर। तो अगर वो अपने बच्चे को बताएगा, वो यही बताएगा, दिस दिस थिंग हैज ऑलवेज बीन हियर, इटर्निटी से है, वो इटर्निटी तक रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट उसका बेटा हुआ, वो भी 3 घंटे में मर गया, उसने भी अपने बच्चे को यही बताया कि ये जो चीज दिख रही है तेरे को, यह इटर्निटी से थी, इटर्निटी तक रहेगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि आई एम इटर्नल, है ना। सो फॉर फॉर अ कीटाणु, there are some germs, they actually live for only 3 minutes, 4 minutes, they get born होते हैं, एंड 3-4 मिनट्स में उनकी पूरा लाइफ साइकिल चल जाता है। स- तो हमारे हिसाब से दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। तभी तो हम क्या कहते हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, वी कॉल देम लाइक कीड़े मकोड़े। फॉर अस वी आर कीड़े मकोड़े एज कंपेयर टू ब्रह्मा जी, बिकॉज ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें 4.3 बिलियन ईयर्स होते हैं। आप सोचो कितनी सारी साइकिल्स निकल जाती हैं उसकी, सतयुग त्रेता युग की सारी साइकिलें निकल जाती हैं। 14 मनु चेंज हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना। 14 मनु, एक मनु जो होता है, एक मनु 72 साइकिल्स, सतयुग, सॉरी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे करके आप साइकिलें गिनते रहो, 72 साइकिल होती हैं, तब तक एक मनु होता है। एक मनु, मनु मतलब एक पर्सन जो इंचार्ज होता है मनुष्य योनि का। अब जब मनु चेंज होता है, तो फिर नेक्स्ट मनु आता है। अभी हमारा व्यवस्वत मनु चल रहे हैं, नेक्स्ट मनु आएगा। तो ये ऐसे कितने मनु, 14 मनु, सॉरी ऐसे 72 मनु जब निकल जाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा। सो द टाइम फ्लोज डिफरेंटली टू ब्रह्मा। देर वॉज ए स्टोरी, देर वॉज दिस, बहुत बड़ा एक वो थे, इट्स भागवतम में आती है। आई डोंट नो वेदर इट्स भागवतम की स्टोरी की कहीं की है। व्हाट हैपन इज, ब्रह्मा जी के पास देर वॉज ए किंग, वाज अ वेरी पायस किंग, सतयुग की बात है। उसको अपनी बेटी के लिए ना, ही वांटेड कि ब्रह्मा जी मेरी बेटी के लिए दामाद ढूंढे। सो ही गोज टू ब्रह्मलोक। उस समय बिकॉज तप इतना ज्यादा होता था, ही वॉज ए पावरफुल किंग, सो ही हैड सो मच तपा, ही कुड गो टू ब्रह्मलोक। So he went to Brahmalok, and Brahmaji was watching a show. He was about to finish, like, suppose 10 सेकंड भी बचा है, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला बैठो। और उन्होंने 10 सेकंड में वो खत्म हो गया, फिर उन्होंने उनको बोला हाँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला अरे मैं अपनी बेटी को लाया हूँ, इसके लिए प्लीज ना कोई लड़का देख दीजिए आप। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है अभी तुम 10 सेकंड यहाँ बैठे हो, तुम्हारी वहां पर कम से कम 100-200 जनरेशन निकल चुकी हैं। तो तुम्हारी कुल का तो कोई, तुम्हारा तो कुल ही नहीं बचा है, मैं कहाँ से तुम्हारी बेटी के लिए लड़का ढूंढ के लाऊं। ये जस्ट, दिस इज हाउ ब्रह्मा का जो टाइम है, दिस इज हाउ हमारा टाइम ऐसे फास्ट चल रहा है। आई डोंट नो वेदर यू गाइस सीन दैट मूवी, जिसमें एक बंदा, एक पर्सन होता है, वो ही वाज लुकिंग फॉर स्मॉल लिटिल क्रीचर्स, पेड़ों के बीच में क्रीचर्स होते हैं, एंड वो जो क्रीचर्स हम लोगों को देखते हैं ना अपनी नजर से, तो उनको लगता है ये कितने स्लो हैं, ऐसे चलते हैं, ढक, they look at us and they say they are so slow, and for us they were like "Zzzz," like मच्छर के जैसे, है ना। For them that's a normal speed. Similarly Brahma's speed is very very slow as compared to all of us. So उन्होंने बोला अरे तुम्हारी बेटी को मैं किससे ब्याहूं, तुम्हारा तो कुल ही नहीं बचा है, तुम्हारा तो कुल छोड़ो, तुम्हारे आगे की 100-200 जनरेशन निकल चुकी हैं। उनको तो लग रहा है तुम गायब हो गए, दे couldn't find you anyway। तो उन्होंने बोला अब क्या करूं, बोले कुछ नहीं, चलो अभी चलते हैं पृथ्वी पे। तो आप सोचो सतयुग में गए थे, 10 सेकंड वहां पर लगे, वो तब तक त्रेता युग हो गया था, है ना। और सॉरी, त्रेता युग भी नहीं था, सतयुग में गए थे, त्रेता युग भी निकल गया था, अम, और द्वापर आ गया था, 2 युग निकल चुके थे, द्वापर आ गया था। द्वापर में फिर उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी के लिए, अब वो आई, तो अब वो क्या है, उसकी हाइट कम से कम नहीं तो 40-50 फुट की, है ना लड़की, बिकॉज उस समय लोगों की हाइट बड़ी होती थी। तो अब उन्होंने देखा कि द ओनली पर्सन हु कैन मैरी योर डॉटर इज ये बलराम जी, बिकॉज बलराम जी बोले ही इज ए शेषनाग, एंड ही टुक अवतार ऑफ ब्रह्मा जी, ये बलराम, बलराम उन्हीं के मतलब वो बलराम के रूप हैं, तो आप इनसे शादी करा दो। तो बलराम जी ने उनको देखा, बलराम जी ने अपना हल लिया, उनके ऊपर रखा ऐसे, और उनको छोटा कर दिया, अपने साइज का कर दिया, एंड देन दे गॉट मैरिड।
तो कहने का मतलब है that time flows differently and we got to understand this. So this is Bhagavatam. That's why it's considered to be one of the most complicated verse. I shouldn't say I should not say complicated. I should say very elaborate, and it is far out. It's very hard to comprehend कि क्या चल रहा है. So at the end of Lord Brahma's life, which takes place at the end of Brahma's 100 years of age, in our calculation, end up in 4 point something trillion years. And उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं. ब्रह्मा जी इज नॉट इटर्नल. ब्रह्मा जी dies, and the next Brahma will be someone else. So I think the next Brahma, somebody was telling, there is a scriptural reference, I think Hanuman ji would be the next Brahma. Hanuman ji will become the next Brahma, he will take the post. Brahma is a post, that means post of a creator. So once the whole thing annihilates, when again Mahavishnu will breathe out, the things, all the pores में से वो निकल के आएंगे सारे के सारे planetary system. And then in that planetary system, what will happen? In that planetary system, um, Brahma ji will, sorry, Karanodaksh, Garbhodaksha Vishnu will be lying on this thing. उनकी नाभि में से कमल निकलेगा, and Brahma will appear. That Brahma will be a different Brahma to this Brahma right now. And because that's a post, somebody else. So there is a qualification to become a Brahma. We have all done a role of Brahma in once in our past gen lives. है ना? So well, we have done that. Yeah, 3.11 trillion, 3.11 trillion years. हाँ. So that means what happens? So हम लोगों ने, so ये ब्रह्मा बनेंगे जब, when this Brahma is there, he will start again. Next Brahma, है ना? And this is extremely hard for us to get, because all of this thing is happening. Why? Because of material energy called Mahat. Sorry, I'm not sharing the screen. I'm so sorry. I'll just share now. Um, all of these thing, this entire completely annihilated, and in both periods मतलब creation और annihilation के period में, both the material energy called Mahat Tattva and marginal energy called Jiva Tattva merge in the person Supreme Lord. Mahat Tattva क्या होता है? महत तत्व मतलब ये जो पूरा का पूरा अंडा है, ये मटेरियल जो चीज है वो उसको कहते हैं महत तत्व. और जीव तत्व कौन है? हम लोग हैं. जीव तत्व मतलब us as souls, they all merge in the supreme lord. जैसे मैंने बताया ना, महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, we all go back. फिर जब वो सांस बाहर लेते हैं वापस, all this creation will happen, and we will actually take birth based on our past karmas. है ना? Now we spoke about this. What does that do actually? um हाँ, in the Shruti mantra, it is said that only Vishnu existed before the creation, and there was no Brahma, Shiva, or anyone. है ना? And Vishnu means Mahavishnu, who is lying on the causal ocean. है ना? अभी क्या हुआ? He is called Narayan, है ना? Garbhodaksha Vishnu is called Narayan. My son's name is Narayan. When he got in, अभी उसका ना जब, I think he was 1 year old or 2 years old, उसको baptize कराया चर्च में, जाना baptism था उसका. So it's no, it's not baptism. Sorry, it's called dedication. So we dedicated our son in the service of Lord Jesus Christ, according to Christianity. So they had to go and tell in जो pastor थे, he has to go in front of the people and say, hey, his name is Samuel Narayan Mishra. So he has to give, Mishra is the last name, so no explanation required, but he has to give explanation about Samuel and Narayan. So he said Samuel means someone who will always walk in the name of God and with the name of God. That's called Samuel. But Narayan, he translated as water. Because उन्होंने गूगल करा होगा ना, गूगल में लिखा हुआ आ गया, is a causal ocean. And then he explained that he's a ocean of God's mercy or whatever it is. Like, they said whatever, but it's actually not. Narayan actually someone who is sitting on water, but he is what? He is sitting on causal water. Cause का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं सर्व कारण कारणम, cause of all causes. Cause of all causes, sarva karan karanam. Now we're gonna do um,
हाँ, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि उसके उनके पोर्स में से निकलता है. नाउ आई एम गोना गेट समवन एल्स टू रीड द रेस्ट ऑफ इट. जस्ट गिव मी 1 second. Can someone read from here, मैं पढ़ूं प्रभु जी? please? 1 second, yeah. Hmm. Okay. Thus, Govinda or Lord Krishna is the cause of Mahavishnu also. The ladies talk about the Vedic truth must have heard it from the ladies talking about the Vedic truth must have heard it from authoritative sources. An authoritative source is the only means of knowing about transcendental subject matter, definitely. There is no alternative. The merging of living being into the body of Mahavishnu takes place automatically at the end of Brahma's 100 years. But that does not mean that the individual living being loses its identity. The identity is there, and as soon as there is another creation by the Supreme Lord of will of the Lord, all the sleeping and active living beings are again let loose to being their activities in the constitution of past different spheres of life. It is called Supta Tiha Nyan. Is it right, Prabhuji? Suptotiha. Suptot, suptot iha. So Suptotiha suptot itha. Nyaya. Yeah, yeah. Nyaya. Or awakening from sleep and again engaging in one's respective continuous duty. When a man is asleep at night, he forgets himself what he is and what his duty is, and everything of his waking and everything of his waking state. But as soon as he awakens from slumber, he remembers all that he has to do and thus engages himself again in his prescribed activities. The living being also remain merged in the body of Mahavishnu during the period of inhalation. But as soon as there is another creation, they arise to take up their unfinished work. This is also confirmed in Bhagavad Gita 8.18 and 19. The Lord existed before the creative energy was set in action. The Lord is not a product of a material energy. His body is completely spiritual, and there is no difference between his body and himself. Therefore, the Lord remained, before creation, the Lord remained in his abode, which is absolute and one. Haribol. Beautiful. It is not easy, eh? When you, when you look at these things, it's actually not easy to to see, you know, to understand the whole thing. So avyaktatad avyaktasya sarva prabhavant hare में प्रभावंती अहर आग में रात्रि आग में प्रलीयन्ते, है ना, रात्रि आग में प्रलीयन्ते तत्रे वाक्य वाक्यत संज्ञके. At the beginning of Brahma's day, all living entities became manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the manifest again. And the next verse, Bhutagram sa evayam भूत्वा भुक्त्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्ते हरागमे. Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. So this is what is happening now. It is very critical, very interesting what Srila Prabhupada talks about. Like, he mentions, like, one of the things that I wanted to talk about here is this. There is, oh, Richa Mataji, sorry, you have a question, please ask. Prabhuji, I want to understand why there is such a, I mean, few days here, there, I understand fast, slow, but that much of gap. Is there a Mm. I'm sure there is a reason and purpose behind it, but what what is it that makes it so diverse? Okay, so yes, it's a very good question actually. Um, so what happens is, for example, like, have you ever played video games, Richa Mataji? खेले हैं आपने वीडियो Of course, गेम्स, Prabhu, of course, है yeah. ना? हैव यू प्लेड मारियो, मारियो Yes, मारियो yes. सुपर Mario मारियो, Bros. वी यूज्ड टू प्ले Yeah, सुपर मारियो. कितनी चांस होती थी उसके? 3 चांस होती थी उसके पास, yeah. है ना? So the reason God, God knows the way we live our life is the way we play Mario game.
कूद रहे हैं कहीं पर भी, वो आके उसने कछुए ने खा लिया कभी हमें, कभी हम लोग किसी कांटे के ऊपर गिर गए, कभी कभी वो इलेक्ट्रिक रॉड लग गई, वी डाई और वील डाई लाइक कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली. You know what God does? God says, you know what? The kind of mindset you have, I'm going to give you many, many, many chances. In my one breath, I want to give you many chances for you to get reformed, to get to get to a path. क्योंकि क्या है, this place, material world is actually a create the material world is created because when we were with God, we wanted to enjoy like God. We wanted to be independent. We wanted to enjoy independent of God. So, for example, if there is a tree, ठीक है, एक ट्री है, ट्री की एक लीफ बोले ना ना ना, आई एम सिक ऑफ ऑल यू गाइस, I'm gonna be separate. So somebody will take the leaf out and throw it. What will happen to the leaf? It will die. ठीक है. God knew that we are like that leaf. But leaf goes, no, 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 I want to go, I want to go, I want to go. I can't, I just want to try, I just want to try. So God goes, okay, so let me see what can I do. I'm gonna create something for you. तो क्या करते हैं, वो एक पत्ता तोड़ते हैं, फिर एक गमला तैयार करते हैं. He will prepare a little, थोड़ा सा वो गमला तैयार करेंगे, उसमें सब कुछ डालेंगे. He will put the leaf in there a little bit hanging out. तो लीफ क्या करेगी, शायद थोड़ा सा अपने आप को बना लेगी, ठीक है. But at the end of the day, that is not the purpose of life. क्योंकि a leaf cannot, in any circumstances, live the same prosperous life that it was living when it was with that tree. So the leaf, और इसी तरह जैसे एक पतंग है ना, पतंग, काइट, काइट is stuck on a string, और उड़ती है, उड़ रही है, काइट उड़ रही है. वो तब तक आसानी से उड़ेगी जब तक वो स्ट्रिंग से अटैच है. वो पतंग बोलेगी नहीं नहीं नहीं, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग मी, लेट मी गो, आई कैन फ्लाई हायर, प्लीज लेट मी गो. एंड एज सून एज यू कट द स्ट्रिंग, व्हाट हैपेंस, it goes high a little bit and then it comes down. Yeah. Yes. So what God did is God created like us. He said, look, you cannot live without, you cannot live in separation with me. And we said, no, 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 let me try. And he said, oh my goodness, okay, I'll let you try. So what I want to do, I'm going to create this material world for you. But what is it that you want to experience? And we said we want to experience lordship. We want to experience that. I want to experience that I'm God. Okay, you want to experience your God? That means you want to control everything. You want to think that you're controller. He goes, no, you can't be controller, but I'll give you Maya that will tell you that you're a controller. So here you go, Maya. I'll cover you with Maya, and here you go in this world. जैसे मेरा बेटा बोलता है, I want to drive, I want to drive. He's only 7, so I'll take him to what do you call that? Go-kart. Huh? Go-kart? Go karting, या फिर वो कौन सा लूना पार्क, and he say, hey, here is the Dodgem car, just go and sit in the car. And he does this, whatever, he just, and after some time he goes, oh papa, I want to go home. Then I say, come. है ना. So Krishna is waiting, कब हम एक गाड़ी चला रहे हैं, when would we actually get bored, and we'll say, Krishna, take me back. And what will happen is, during this time, this whole time when we are in this planet, we think we are the Lord. अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते. भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियक माणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते. वी आर, जो प्रकृति है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, प्रकृति क्या कर रही है, सतगुण तमोगुण रजोगुण का चक्कर चला के सारा काम प्रकृति कर रही है. और लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अहंकारी हैं. अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ का मतलब होता है बेवकूफ. अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम लोग क्या सोचते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, हम ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा बेटा स्कूल जा रहा था ना, स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपने बैग में ना एक 2-3 रॉक रख रखी थी, बड़ी बड़ी, शो एंड टेल के लिए ना. पर उस वेरी हैवी बैग, है ना. मैं उसको बोला था, बेटा आप नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा, अरे पापा आई कैन पापा, आई कैन पापा, आई कैन, उसने ना डाला, और वो ऐसे पीछे गिर रहा था, तो मैंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया. And he goes to me, he goes, see, Papa, I can carry it. मैंने कहा, बेटा, you're not carrying it. I am carrying it. I'm holding on to it. He goes, no, you're not. I said, then I let go. And he went back. है ना. तो this is what Krishna does. Krishna is holding on to us, and Prakriti is doing all of this, but we are thinking we are doing it. And that illusion that he has created, that we think we are Lord. That's why what we do is we try to control our
son, our kids. We want to control our neighbors. We want to control our partners. We want to control our friends. We want to control our parents. We want to control our siblings. We want to control everything around us. Controlling का मतलब I want everything around us according to me, not according to you. You know, that's why some people are so critical. They will हर चीज में नुक्स निकालेंगे. They will say, hey, don't put the pen like this. It has to be like this. Because what is it? It's called देहात में बुद्धि. देहात में बुद्धि मीन्स दे वांट टू एक्चुअली, तभी तो प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं. इसको हिंदी में बोला जाता है प्रभुत्व. वी वांट टू बी प्रभु, वी वांट टू बी कंट्रोलर. एंड दैट्स व्हाई डू वी गेट एंग्री? बिकॉज समथिंग डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू द वे वी वांटेड. वी गेट एंग्री, है ना? Because we want to control. Why we do get sad? Because something does not happen, didn't happen because the way I wanted it to happen. We get sad because we want to control everything. And that controlling part is pure Maya. The day we realize I am not the controller, है ना? The day we realize मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. When you understand that line, then you will surrender. And actually vice versa as well. When you surrender, then you understand that's happening, or when you understand that's happening, you will be able to surrender. It both goes hand in hand. So आपने जो क्वेश्चन पूछा था, why is it such a vast difference? Because God wants to give us so many chances. In one Brahma's time, we have 3.11 trillion years to transform ourselves, है ना? It's not just once or twice. तभी तो that's why our और philosophy is यूजलेस much भी more. यार. That's why our philosophy is much more deeper, because according to Christianity and according to Islam, we only have one life. Either you accept Allah or Jesus Christ, or you go eternity to hell. ठीक है? That's not possible. How can we call that God merciful God if He's not giving us a chance? Then I was talking to Roxy and she said, oh, He does give us a chance all the time, every time. I said, but what if someone doesn't understand for the in the whole lifetime? She goes, that's it, done. I said, no, it can't be. God cannot be that merciless saying that, I gave you a chance. और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? ये 3.11 ट्रिलियन ईयर्स तो सिर्फ एक सांस का है. और ऐसा ये ना, इटर्निटी से ही ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. He's keep giving us time. Some of us have been here for multiple of 311 trillion years. But there are some who who have gone back, and there are some who has gone back and come back to preach, like for example our Srila Prabhupada, and these very senior um, Guru Maharajas and stuff. They are actually not the नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले. उन कृष्णा के भेजने पे दे केम टू भूतल. भू पे भूमंडल पे तभी आए. दे आर नॉट हेयर बिकॉज ऑफ their karma. Like sometimes we'll read Srila Prabhupada's Jivani and we think, oh my goodness, he has to go through all this hardship because he must have done bad karma. No, that's not his karmic reaction. That was his. So हमारे ऊपर माया हावी होती है, उनके ऊपर योग माया हावी होती है. So that he can teach us with his example. If you get into that kind of trouble, you can actually. That's why when when Ram went through all these troubles, somebody said, "Oh, Ram ने बड़े खराब कर्म करे होंगे पिछले जन्म में." Bhagwan is not under the jurisdiction of karma. He is way beyond it. He did that because he wanted to establish dharma. He Yeah. wanted to actually tell people this is what a person, a gentleman, this is how a husband should be, this is how a brother should be, this is how a father should be, this is how a son should be, this is how a son-in-law should be. So ये सारी चीजें समझाने के लिए he went through all of those things. But that doesn't mean that, oh my goodness, he did it because he has karmic reaction. He doesn't get a karmic reaction. So यहाँ पर does it make sense, Richa Yes, Mataji? yes, yes, probably. Yeah, Thank you. but thank you for asking that question because it's opened up a lot of other things जो I did not have in my notes as well. Anyway, so there is a 9.10. भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेया जगत वि परिवर्तते. मया अध्यक्षेण, मया मतलब मेरी, अध्यक्षेण का मतलब मेरी अध्यक्षता में क्या हो रहा है? प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, मेरी अध्यक्षता में माया सूयते से चराचरम, नॉन मूविंग और मूविंग सबको कौन बना रहा है?
प्रकृति बना रही है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में बना रही है? मेरी अध्यक्षता में। कृष्णा इज सेइंग दैट। फिर उसका नेक्स्ट है, हेतु नाने ना कौन्तेय जगत वी परिवर्तते। अंडर हिज रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड annihilated again and again and again and again. इट्स वर्किंग। सो जो प्रकृति है किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में। एंड ये प्रकृति कौन है? दिस इज माया देवी, दिस इज दुर्गा देवी, एंड टुडे टुमारो इज नवमी, इजंट इट? टुमारो इज नवमी, है ना? सो दिस इज Ashtami, Prabhuji. अष्टमी। Yeah. टुडे इज अष्टमी ना? No, no, tomorrow is Ashtami and Parson is Navami. परसों नवमी, मतलब सैटरडे को नवमी है? जी। ओके, आई थॉट टुमारो इज नवमी। अच्छा ठीक है। अच्छा, टुमारो इज अष्टमी। तो सो एनीवे, सो दिस प्रकृति, इट्स अमेजिंग ना। हमारे इस दोनों लेक्चर्स में दुर्गा माँ का नाम आ गया, मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। ये दिस वाज नॉट प्लान्ड बाय द वे, है ना? सो this is really good, and this is what she does. She is actually working in the material nature, which is one of my energy. Material nature matlab Durga Ma is one of my energies. It's working under my direction, O son of Kunti. वो क्या कर रहे हैं? She is producing all moving and non-moving beings, and under its rule this manifestation is created and annihilated again and again and again and again and again. Now let's go to लेट्स गो टू, वाह व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? क्या हमसे, चलो ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी इज बियॉन्ड क्रिएशन, ये हमें समझ में आना चाहिए। ही इज बियॉन्ड क्रिएशन क्योंकि ही क्रिएट्स एवरीथिंग, ही इज नॉट, इज कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना? नाउ हाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है यार? ये अभी हमारा हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि यार ठीक है यार, आई गेट इट, बट क्या इससे क्या सीखूं? क्या मैं इससे ये सीखो कि हाउ टाइनी मिनिस्क्यूल वी आर, and how tiny minuscule is our problems, you know. I um i just i was talking to this guy. He lost his brother, wife, mother, only brother, wife, mother and father in one car accident. Everyone in the family, his whole family, his side, and his wife also. You know how old? 26, 26-year old, lost everyone. And I was thinking here and thinking, oh my goodness, the cards, the business cards that I have printed, they are actually not that great quality. And can you imagine the amount of stuff that that guy is going through and amount of stuff that I am going through with my this flimsy card? So it gives you perspective. We think that when we look at social media and stuff, we look at, oh my goodness, everybody has so many things. Everybody is in love. Everybody is like, they have no issues. They have good friends. They always travel. You actually, you know what? You look behind the curtain. This Prithvi is called Dukhalaya Shashwatam. Nobody is as happy as it looks on a social media. Actually, nobody is as happy as they look in person as well nowadays. It's very hard to find people who are actually very content. The only people who are really content with their life are the people who are spiritual, and that is what we need to get out of this. We have to understand how small we are and how small our problems are. We need to get detached because there is a story. There is this Muni called Lomharsh Muni. Lomharsh Muni वो थे कि उनको क्या, उनकी एज क्या थी? उनको बोला था आप कितना जिंदा रहोगे? हर एक बार इंद्रदेव, एवरी टाइम एक इंद्रदेव मर जाएगा, मरेगा। इंद्रदेव इसी साइकिल में चलते हैं, ठीक है? सो व्हेन ब्रह्मा डाइज, ब्रह्मा के 100 साल में इंद्रदेव जो हैं वो 365 टाइम्स, 365 टाइम्स मर जाते हैं वो। अब नए 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 इंद्रदेव आ जाते हैं, ठीक है? 300, एक्चुअली ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ इंद्राज आर देयर इन इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो इंद्र भी बहुत लंबा जीते हैं। तो रोमहर्ष को क्या वो था कि एवरी टाइम आपके चेस्ट में एक बाल, जब एक इंद्र मरेगा तो आपके चेस्ट का एक बाल टूट जाएगा। उनके चेस्ट पे कम से कम नहीं तो लाखों बाल थे। जब ये सारे बाल झड़ जाएंगे देन यू विल डाई। दिस वाज हिज बेनेडिक्शन कि इतना आप जियोगे, ठीक है?
That means he will probably billions of years जिएंगे वो. So one day he was chanting the holy name, and somebody went to him and said, "Hey, why are you chanting in the sun? Why don't you put a hut for yourself?" तो उन्होंने बोला, यार टेम्परेरी जीवन है, क्या हिट बनाना, थोड़े दिन का ही जीवन है, इसमें क्या हट बनाना. नाउ दैट इज लोम हर्ष, ही इज गोना ही वाज गोना लिव फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स. ही इज टेलिंग this person that I don't have time to build a hut for myself because life is too short to waste on anything other than chanting the holy name of the Lord. So now what we learn from this practical application is practical is adopt a detached perspective and meditate on Krishna's transcendence. है ना, हमें उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर पे हम लोग अगर फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे एवरी डे, व्हाट विल हैपन, इट विल गिव अस, ही विल टेल अस, ये छोटी मोटी चीजों के पीछे जो मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, इट डजंट रियली मैटर. ठीक है. एंड द सेकंड वन दैट वी सॉ इन दिस थिंग इज साइकिल्स ऑफ क्रिएशन. है ना, कृष्णा की जो डिवाइन एनर्जी है सब कुछ वही बना रही है. जो एक कल्प जिसको कहते हैं 4.3 बिलियन ईयर्स, भगवान ब्रह्मा का एक, जो उसको एक कल्प बोला जाता है. और ब्रह्मा का जो वो है, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स जो है, वो ब्रह्मा की लाइफ है. उसका प्रैक्टिकली हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वी नीड टू डोंट अटैच योरसेल्फ विद टेम्पररी थिंग. और दूसरा क्या है, वी आर पार्ट ऑफ द, दूसरी टीचिंग क्या है, वी आर पार्ट ऑफ द लार्जर सर्कल. वी नीड टू हेल्प ईच अदर, वी नीड टू बी पार्ट ऑफ द सर्विस, वी नीड टू एक्चुअली engage in service of others, because that person, every single human being and every single animal, every non living and non living things, they are part and parcel of Krishna. So when we serve them, that means that because they are part of us, है ना, तो हमें उनको सर्व करना चाहिए. दिस इज अनदर थिंग. कई बार क्या होता है, वी आर लिविंग इन आवर छोटे से शेल में, हम लोग इतना रह रहे हैं कि वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. वी एक्चुअली फॉरगेट अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. थर्ड थिंग वी लर्न इज कृष्णा एज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. ठीक है. और इसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वी नीड टू सरेंडर टू कृष्णा इन आवर डेली लाइफ. लाइक इट्स नॉट दैट आई विल सरेंडर टू कृष्णा व्हेन आई हैव नथिंग टू सरेंडर. अरे कहते हैं ना कि सपोज कोई आदमी आया, ठीक है, मेरे पास आया, उसने बोला कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, है ना. तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं दान नहीं देता, भाग जाओ यहाँ से. फिर लेकिन वो डेस्परेट है, उसने मुझसे छीन लिया. अब वो छीन के भाग गया, तो मैं पीछे से बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा दान करा मैंने तेरे को, दान करा. That should not be our thing, because that's not दान. दान means when you actually surrender. दान उसी को शोभा देता है जिसके पास हिम्मत है कि हाँ, अगर मैं चाहूं तो नहीं दूंगा, but this is purely on my free will I'm giving you this, and that is called दान. है ना, दैट इज कॉल्ड दान. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू सरेंडर टू कृष्णा एट द बिगिनिंग, राइट नाउ. है ना, मेक कृष्णा एज सेंटर ऑफ आर एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट. द फोर्थ थिंग दैट वी लर्न इज लिविंग एंटिटीज एंड साइकिल्स ऑफ क्रिएशन में, कि फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अब ये जो हम लोगों के, ये यार ब्रह्मा इतने साल के हैं, ये इतने साल के हैं, दिस इज नॉट जस्ट वर्ड्स. व्हेन यू स्टार्ट कॉन्templating ऑन इट, यू विल एक्चुअली फोकस कि यार मैंने, व्हाट एम आई ट्राइंग टू गेन इन हियर. No matter how many properties I have, no matter how what kind of car I drive, no matter what kind of partner I have, ultimately I'm gonna go back home, back to Godhead. I need to make sure that I can utilize this purpose of my being in here and go back home, back to Godhead. And the fifth point is Krishna's eternal spiritual form. इसमें क्या है, practical application is we need to visualize Krishna's spiritual form. कैसे कैसे देख सकते हैं हम, through the पास्ट टाइम्स, भगवान के पास्ट टाइम. जब कार्तिक मंथ आ रहा है, टुमारो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कार्तिक मंथ, व्हाट डू वी नीड टू डू, ऑल दोस sort of things. So when we actually visualize it and value the eternal over the temporary, then we will be able to make the best use of our bad bargain. And the last one is practical application of, for lessons for our devotees, is engage in devotional practices daily, chanting the holy name of the Lord, very very important. And embrace the surrender. If we cannot surrender until we understand the potency of that person. महाविष्णु के रोम छिद्रों में से निकल रहा है, ही लिव्स फॉर, उनकी जो एक सांस है, दैट इज 311 ट्रिलियन ईयर्स. अगर हमें ये पता है, वी नो हाउ बिग महाविष्णु इज. एंड हु महाविष्णु इज, ए महाविष्णु इज part of
is a part of the part of the part of the part of Krishna. 4 or 5 level down पुरुषा अवतार में आते हैं वो. महाविष्णु इज नॉट एन इटर्नल, ही इज नॉट ए द मोस्ट पावरफुल एंटिटी. मोस्ट पावरफुल इज कृष्णा. कृष्णा के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है ये महाविष्णु, जो 311 ट्रिलियन ईयर्स तक उनकी एक सांस है. इमेजिन कृष्णा की एक सांस कितनी होती होगी. You know what I mean? So this we need to understand, and then we embrace the surrender. Unless we know the power of the person that we are talking about, we cannot surrender onto him. आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब बांग्लादेश, when we freed Bangladesh from Pakistan, 900,000 900,000 soldiers surrendered. They did not surrender because they understood that they have no choice. Sheer power of India was so grand at that moment that 900, that was the biggest surrender in the history till now, history of world, that so many people actually surrendered, army surrendered at once. And it only happened because they understood the strength of India. Now, if we don't understand the strength and the position of Krishna, we will never be able to surrender. And this is what we learn from this thing, because, and इसीलिए कहते हैं, dear devotees, the essence of this verse is to recognize Krishna's supreme position and our relationship with him. When we reflect on these teachings, we can transcend temporary material world and go back home, back to Godhead. And how can we go back? Through devotion, surrender, spiritual practices, and when we align ourselves with Krishna's divine nature. Okay. Let us embrace Krishna's divine presence in our lives and inspire others by sharing his glories. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. I'm so sorry, इसमें मैंने कुछ स्टोरीज भी लिख रखी थी जो आई वांटेड टू डिस्कस, बट मैं वो नोट्स में डाल दिया है. यू गाइस कैन रीड इट. I'll put those notes in our um, WhatsApp group. Okay. Anybody has any questions, comments, anything they want to share? Prabhuji, this is so, I don't know whether it's Krishna's plan or it's just a coincidence. We are doing in our Bhakti Vriksha, chapter 11, the universal form. Oh, wow. So it's kind of, how supreme, how massive is, how Arjun is bewildered by his Yeah. Swarup, and, how he feels insignificant in front of that universal form. So similar kind of, lesson for us in this chapter as well. Yes. Yes, and it is actually amazing the way the when Arjuna reacts to the Virat Roop, it is incredible. Like, and I think you will talk, Krishna will talk about the 6 stages of surrender as well, and it will be incredible actually. क्योंकि अभी तो are you doing Bhakti Shastri, Mataji? नो प्रभु, जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी तो भगवत गीता ही कर अच्छा रहे हैं हम अच्छा लोग. अभी भक्ति वृक्षा में चैप्टर 11 चल रहा अच्छा है. अच्छा भक्ति वृक्षा में चल रहा है. अच्छा, ठीक है ठीक भक्ति वृक्षा में चल रहा है प्रभु. है. हाँ. ओके, ठीक है. कौशल प्रभु सिखा रहा है. Kaushalananda Prabhu is amazing. He's amazing. Anyway, so that's really good. I think that's why we have to understand कि यार it's not a very easy subject matter, है ना? And sometimes it feels like it's too far out, man. What does that got to do with me? But you need to understand there is nothing in our life that happens for is nothing that happens in our life is futile. you know when you're driving your car and you meet all these people crossing you and overtaking you, going across you, we are all created somehow or other. Otherwise we will not be in the same country, same road, same thing. There are some sort of connection we have. And that's why when we meet people, we should actually do very we actually deal we should deal with people very respectfully, because everybody plays a part. Even the people who are my enemies, they play a part. Some people who have hurt me in the past, they play a part. you know the person who, if I have a really bad boss, that bad boss will make me a good boss, because that bad boss will teach me how not to behave, and I will try to be a better boss. And someone who is a bad employee will teach me how to be a good employee. And that's why every piece of information, everything that we get connected to, every string that touches us in any way, shape, or form, they're actually there to teach us, to make us a better person. But the problem is, what do we do with that information? That is critical. And people who are in a spiritual path, they choose differently. They don't react, they respond to their situation.
There was recently I was reading an article about twins. They did a massive survey on twins, and they found a lot of twins where they were born in the same family. They had the same kind of upbringing, but one became extreme opposite. Both became extreme opposite in their lives, and they interviewed it. For example, they one एक का interview उसमें दे रखा था. They asked this guy, father was alcoholic, abusive, very mother को बहुत मारता था, and all those sort of things. So one person, one twin, उनके twin थे बच्चे, और दोनों, एक बंदा he became a very big lawyer in America, and other one became a drug addict, and he was in a lot of criminal offenses and stuff. दोनों का इंटरव्यू दिया, दोनों से पूछा why did you become, एक को पूछा why did you become lawyer, तो उसने बोला because my dad was abusive, we had a very bad life, my mother was this, so I became a lawyer to give क्या बोलते हैं, to give back to those people who are getting taken undue advantage of, है ना. उसके दूसरे बेटे से पूछा why did you become criminal, same thing, because my mom was abused, my dad was drunk, and all those sort of things, life is not fair, I became like this. So it's not the circumstances that will make who we are, what we do with those circumstances, where do we actually draw a line, which part of our journey we will take a detour. If you're on a wrong path, we got to take a detour. And if you are on a right path, make sure you stay on the right path. So where in our life we actually get that understanding is the time when people will actually start going into a right direction. The only thing is, it is easier when people are spiritually inclined, they are much more open to change and understand and accept that I'm faulty. Unless and until we understand that we are wrong, we cannot we cannot grow. There is a verse, I think some Maharaj said, I live to be corrected. That's his motto of life. I live to be corrected. I mean, that is incredible humility. Like, that, when you are this kind of humility, when you have this kind of humility, you can surrender easily. And that is the purpose of these classes. These classes are not here to tell you how to do Mahan Yagya and become rich and wealthy and this and that and live a happy life and go and die. No, these are for us to understand why we are here. What is the purpose of this human life? What can I do right now in order to create that life that I want? Not only just this life, even next life and beyond. You know, and that is the purpose. और अगर ये purpose पूरा हो रहा है, that is the only success of this. And I think the only way we can do it is through Srila Prabhupada's purport. And I think otherwise, if you look at the just translation, it's nothing. Okay, ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं आपस में कृष्णा के बारे में, so what? Done. But Srila Prabhupada gives us a very different direction. Thank you, Puja Mataji. Anybody else has any questions, any comments, any realization that you want to share? हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare आई Krishna डोंट ji. नो कि क्वेश्चन मेरा करेक्ट है या नहीं. बस मेरा एक कंफ्यूजन है कि व्हेन द पीपल आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, देन व्हाई दे आर लुकिंग फॉर द लग्जरियस लाइफ व्हेन वी नो कि वी हैव टू सरेंडर टू एवरीथिंग इन कृष्णा. मतलब मेरा एक Hmm. खुद का कंफ्यूजन है, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्लटर द थिंग्स. तो Fair मुझे enough. लगता है कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, सो दैट्स देखो, व्हाई. एक्चुअली क्या है, दिस इज द plight ऑफ एवरी डिवोटी. आप अकेले नहीं हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिवोटी इन द सेम बोट. मैं आपको बताता हूँ द रीजन व्हाई is because अभी भी even right now, and look, I am not talking about you Mataji, I am talking about me. The reason sometimes I want to have a luxurious life, I want to grow as a, in material life as well, is only because I'm not 100% surrendered to Krishna, and I don't want to depend on Krishna, because I don't really trust Krishna, because Krishna का मतलब होता है he will take everything away from me. So what I'll do is I'll pray to Krishna as well, and on the side I'll do this as well. So क्या होता है? So, and it is not, it's not a right way of living, है ना? But at the same time we have to acknowledge and acknowledge that we are not pure devotees right now, है ना? We are not pure devotees. So we need to understand, because we are not pure devotees, it's okay for us to understand where I am. जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं कहाँ हूँ, तब तक I can't. Like for example, I'm right now in Caroline Springs, है ना? If I don't know where I am, then I don't. If I have to go north, if I don't know where I am, I don't know which side to go,
है ना. सो फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट कि आपने जो बोला है आपसे ये हो रहा है, दैट इज आपकी 50% तो यू आर ऑलरेडी विनर. That you can understand that sometimes we get caught up into materialistic thing, and we know that what is the purpose, we will still get caught up into materialistic thing. That is a good thing, because now we can actually catch ourselves in this. Now the second stage that we have to do is, second stage comes is surrender. Now this is lack of surrender. मेरे साथ भी है. There is a lack of surrender. Because of lack of surrender, we want to rely on our material aspect of life for us to be happy. Actually, we don't need anything. We actually don't need anyone or anything to be happy. The only thing we need is Krishna and his devotional service. And this is apparent when you go and see some of these Babajis in Vrindavan and even Himalayas and stuff. They are so blissful. You look at their eyes and they're glittering with happiness. They have barely any clothes on them, but when they sing, they are like div- drowned in the ecstasy. When they eat, उनको कुछ भी दे दो मिट्टी में गिर जाता है. वो ऐसे ऐसे करते हैं, झाड़ते हैं और खा लेते हैं उसको, रोटी को. आई मीन हमें क्या लगता है, अरे सूची मुची ये वो. एंड दे डोंट केयर, बिकॉज दे आर इन दैट एक्सटेसी. दे डोंट केयर ऑफ अबाउट एनीथिंग, बिकॉज दैट इज प्योर ब्लिस. हमारे साथ क्या है, वी वांट एवरीथिंग. भगवान आप तो हो, लेकिन मुझे नारायण, आई नो आई नीड यू, बट आई नीड लक्ष्मी एज वेल. If you want to come to my house, come with Lakshmi, otherwise don't come. And that's not how it works. You invite Narayan in the house, and Lakshmi will come only if the Lakshmi is not gonna deviate you from your bhakti. And this is what we have to. तो क्या होता है when we go surrender? Next, rakshashyati iti vishwaso. There are 6 stages of surrender. When we go through those 6 stages of surrender, I can put that on in my. अभी मैं हमारा जो ग्रुप है, आप उसमें हो ना यशी माता जी, है ना. I will put that in that group. 6 stages of surrender. That is the only way we can actually get out of this zone of नहीं यार, थोड़ा सा और, एक प्रॉपर्टी और, ये और वो और. It will never happen. What ultimately we want is, we want happiness. अपने हमारी happiness, हमारे बच्चों की happiness, है ना. But because we are so stuck, we think happiness is only in this material thing, क्योंकि हमारे बचपन से घुसाया हुआ है. आप टीवी खोल के देखो, अच्छा तुम्हारे पास टीवीएस सुजुकी नहीं है, मतलब तुम लिविंग, यू आर नॉट इवन लिविंग. अबे यार मेरे पास टीवीएस सुजुकी नहीं है तो क्या मैं मर गया हूँ? रोज मरता थोड़ी हूँ मैं. बट दैट्स व्हाट दे शो ऑन द टेलीविजन. दैट्स व्हाट वी शो सी इन द Facebook, Instagram. What do we see? Oh, look at you. Oh my God, look at this life. They actually bought a new GT car. Did you see? Did you see they've got a new? Are हाँ, they got a GT car. So what? So many people have Ferraris. So what? Doesn't really matter. Now, the reason why we do this is because we are enamored by this sense of Maya. persona, Maya. Exactly right, Maya. Maya. We sense of Mm. that, and this is why we need to just, what we need to do is, one, if we start keep chanting, if we keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, that Maha Mantra has potency to get all of that desires of physical and material fulfillment to go away, and we develop a genuine desire to be a very righteous devotee of Krishna. But someone who is a righteous devotee of Krishna doesn't mean he has to be poor. Doesn't really mean it. Actually, it only means कि हमारा इंटेंशन सिर्फ कृष्णा होना चाहिए. अब कृष्णा के साथ हमें पैसा मिल रहा है, इट्स ओके, और नहीं मिल रहा है तो भी ओके. द डे वी कम टू दैट स्टेज, देन वी आर बी ओके. लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है. अभी तो मैं बोलता ना, कुंती महारानी जैसी प्रेयर की बात होती है तो कहता हूँ, महाराज भगवान ही कुंती महारानी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. आप मुझे मत दो तकलीफ, है ना. एंड दैट्स व्हाई, बट वी आर ऑल डेवलपिंग. बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिकॉज यू आस्क दिस क्वेश्चन, यू आर 50% ऑलरेडी देयर. क्योंकि दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड. फर्स्ट थिंग इज एक्नॉलेजमेंट. एंड वंस वी एक्नॉलेज, एंड देन द रिकॉग्नाइज. सो देर आर 4 R's. अब मैं लिख के भेज दूंगा. फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज, एंड दूसरा है रिमोर्स. नाउ अगर हमारी ये चीज है, इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग, यार मैं अभी भी मटेरियल लाइफ में भटका हुआ हूँ, तो वी हैव टू हैव रिमोर्स कि यार हाँ, आई एम, दिस इज नॉट राइट, आई नीड टू, आई एम रियली सैड, आई शुड नॉट डू दिस. देन थर्ड R इज रेक्टिफिकेशन. Rectification is, what can I do right now? So I can't get rid of my TV from the house. I can't get rid of my house. I can't get rid of the car. I can't get rid of the opulence. So what I can do is, I can add Krishna.
I can keep adding Krishna. That is rectification. And when you do that, then the last thing R will come as reunion. Then you will be reunited with Krishna and its purpose. And that's why it's called 4 R's. So first is recognize, which is actually 50% of the job done. Then उसके बाद आता है remorse, which you already have, so you've done another 10-15%. Then उसके बाद आएगा now rectification is you add spiritual activities in your life that will purify you and purify your desire. So अगर आपके पास Mercedes आती है घर में, you will not be baffled, oh I don't want Mercedes because I'm a spiritualist. No, no, no. I have Mercedes. I have no pride. I don't want this Mercedes, but Bhagwan de rahe hain, so I'm gonna use this in the service of Guru Maharaj. I'll take Guru Maharaj from the airport. I'll bring him. Like I will give everything best of what I have to my Guru to bring him from the airport, take him over there, use it for the service of the devotees and things like that. But don't not having pride. So जो devotees होते हैं उनके पास material opulence होती है. First of all, they know that this is not mine. This is Krishna's. Second, they will actually use it for the service of the lordship and the devotees, and they will not use it for sense gratification. And the third thing is they will always, and once that thing is taken out from their life, there will be nothing. They उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. है ना. कहते हैं ना कि मर्सिडीज के बाद कोई किसी को साइकिल चलाने को दे दो तो उसको लगता है अरे यार ये क्या दे दिया. बट बट जो नारायण के भक्त होते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिब्बति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु उपितुल्यार्थ दर्शनम. देयर वाज ए, I'm sorry, this is a little bit point. I want to make it. क्या हुआ कि शिव पार्वती was sitting. Parvati was sitting on Shivji's lap, and Shivji was giving a discourse on detachment. अब आप सोचो, and Chitraketu was going with his wives on an airplane, and he saw this and he said, "Look at that! Only Shiva can do this. No one can do this." Can you imagine? Sakshat Maya Devi is sitting on his lap, and he's talking about detachment. He's giving a discourse on detachment, and he smiled. And Shivji saw him, he smiled as well. Parvati Ma ko samajh mein nahi aaya. She got really angry. She goes, "You are such a rascal. You are acting like a demon. I curse you. You become demon." And then Mahachitraketu did this from his airplane and he went. And that baffled पार्वती माँ. बोले ये क्या है यार, फिर उन्होंने पूछा शिव जी से, कौन था ये बंदा. आई मीन मैंने उसको श्राप दिया, ना ही इसने आर्ग्यूमेंट करा, ना ही इसने मुझे कुछ बोला, सिर्फ प्रमाण प्रणाम करके निकल गया, ये कौन है. तो देन शिवजी सेड दिस वर्स. This verse goes like Narayan para sarve na kutashtin bibbati. Narayan para. People who are in love with Narayan, they are bhakta of Narayan. They are so amazing. They have na kutashtin bibbati. उनको किसी चीज का भय नहीं है. स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्याश दर्शनम. उनको क्या करो, उनको स्वर्ग में डाल दो, उनको नरक में डाल दो, उनको पृथ्वी में डाल दो, उनको कहीं भी डालो, उनको उनको हर जगह एक जैसी लगती है, क्योंकि वो कौन है, नारायण भा है, वो नारायण के भक्त है, वो प्योर डिवोटी हैं. इसलिए ये जो बंदा जिसको आपने श्राप दिया है ना, ये ऐसे करके चला गया क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि ही इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द लीलाज, एंड वट एवर कृष्णा वॉन्ट्स इट इज कमिंग फ्रॉम योर माउथ. ही took your Shrap as an instruction of the Lord, and that's why he namaskar karke he left. He is actually a pure devotee. And that's what happens when pure devotee gets this luxury and all those sort of things. They really don't care. उनसे ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया कोई दिक्कत नहीं है. रामचंद्र जी के साथ क्या हुआ, आज उनकी शादी हुई, कल उनका वो राज तिलक होने वाला है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनको पता चला, चलो ठीक है अब राज तिलक तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, घर से भी निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा जंगल में रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अच्छा 14 years के रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं. Everything for him was normal. है ना. And when we hear this thing, there those things should transform us, saying that you know what, it's okay. अगर मेरी लाइफ में कुछ गुड अच्छा है, it is the mercy of Krishna. If it's not going good, it's still a mercy of Krishna. In a bad situation, he's trying to teach me something. In my good situation, he's trying to teach me something. And that's how we can become Narayan Para. Dheere, 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 slow and steady. Keep chanting and we'll get there. Long Thank answer for a short question, Mataji, but that was very good question. Very good answer, Prabhuji. I think a lot of us connect to that in a very different way, but we all have that same situation. Yes. Hare Krishna. Somebody else said something behind. अच्छा आंटी जी सुन रहे हैं क्या? वो मैंने फोन पे डायल किया उनको. अच्छा अच्छा, वो साथ में. अच्छा, वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा आज का तो सबसे Thank- बड़ी बात यही है
कुछ भी हो, हम उसकी कृष्णा की बस हमें वो चाहिए, उनकी दया चाहिए, बिल्कुल उनका सही, नाम चाहिए, है ना। और बिल्कुल बाकी सही। तो जो कुछ हो रहा है वो उसके ऊपर निर्भर है, और वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई सेंड, मैंने ना नोट्स डाल दिए हैं उसमें ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आई एम सो सॉरी फॉर गोइंग ओवर टाइम। नहीं नहीं, हरे कृष्ण। Hare it's a Krishna. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।